सो आज स्टार्ट करेंगे जनरल बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी बाय एसेंशियल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय अपूर्वा एस शास्त्री एंड संध्या भट्ट। ये आपका रिवाइज्ड रीप्रिंट 4th एडिशन है, ठीक है। तो जनरल बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी, चैप्टर 3.1। Bacterial taxonomy comprises of three separate but interrelated important areas. Classification: it refers to the hierarchy-based arrangement of bacteria into taxonomic group or taxa, singular taxon, on the basis of similarities or difference in their biochemical, physiological, genetic, morphological properties. Nomenclature: it refers to the naming of taxa according to their characteristics by following international rules. Identification: it refers to the practical use of a classification scheme such as identification of an unknown taxon by comparing with a defined and named taxon. Number 2, to isolate and identify the causative agent of a disease. Bacterial classification. Bacterial classification. The most recent taxonomic classification of bacteria is based on Cavalier and Smith Six Kingdom classification 1998. Cavalier and Smith's classification. It is a molecular classification which divides all living structure of the earth into six kingdom, that is bacteria, protozoa, chromista, plantae, fungi, animalia. Kingdom bacteria is divided successively in decreasing order of hierarchy into phylum मतलब division, class, order, suborder, family, tribe, genus, species. For example, the full taxonomical position of Escherichia coli is given in the table 3.111. Principle used to classify bacteria. There is universally accepted principle to classify bacteria. They are mainly three approaches: phylogenetic, Adansonian, and molecular. Phylogenetic classification. This is a hierarchical classification representing a branching tree-like arrangement. One characteristic or trait is being employed for division at each node of the tree. Figure 3.11. This system is called phylogenetic because it implies an evolutionary arrangement of a species. Here the characteristics are arbitrarily given special weightage. Depending on the characteristics so chosen, the classification would give different pattern. Taxonomical position of Escherichia coli. टैक्सा यहाँ पर मेंशन है
बैक्टीरिया इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप और इसे टैक्सा कहा जाता है। ये प्लूरल में, सिंगुलर आपका टैक्सन, ठीक है। तो टैक्सा एंड्स विथ सफिक्स एंड टैक्सोनॉमिक नेम। पहले आएगा आपका किंगडम। किंगडम का जो एंड सफिक्स एंड होता है वो ओएम से एंड होगा, यहाँ पर ओएम है। एंड टैक्सोनॉमिक किंगडम, इसका टैक्सोनॉमिक नेम मेन चीज़ ये है, एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का हम जनरली टैक्सोनॉमिकल पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो एस्चेरिचिया कोलाई का जो किंगडम होता है वो जनरली बैक्टीरिया होता है। फाइलम की अगर बात करेंगे तो टैक्सोनॉमिक नेम आपका आ जाएगा प्रोटियोबैक्टीरिया। क्लास का जो सफिक्स होता है वो आई ए से एंड होगा, आई ए। जैसे गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, तो उसका जो सफिक्स होता है वो आई ए से एंड हो रहा है। सब क्लास आई डी ए ई से एंड होगा। ऑर्डर आपका ए एल ई एस से एंड होगा, जैसे कि आपका एंटेरोबैक्टीरियल्स। सब ऑर्डर आई एन ई ए ई से एंड होगा। फैमिली ए सी ई से एंड होगा, जैसे एंटेरोबैक्टीरियासी। सब फैमिली ओ आई डी ई, ठीक है। ट्राइब आपका ई ए, जैसे कि एस्चेरिचिए। सब ट्राइब आपका आई एन ए। एंड जीनस आपका एस्चेरिचिया। स्पेसीज आपका एस्चेरिचिया कोलाई। The characteristic which are given importance depend upon various properties of the organism such as morphology of bacteria, that is cocci or bacilli, staining properties such as gram positive and gram negative, cultural characteristics such as lactose fermenting and non-lactose fermenting colonies, biochemical reaction example coagulase positive staphylococcus and coagulase negative staphylococcus, antigenic structure example antigenic structure of a somatic antigen present in bacterial cell wall. Although this classification is convenient and user friendly method, it is not a perfect method because the weighted character used may not be valid all the time for a given bacterium. For example, fermentation of lactose, though, is an important property to classify family Enterobacteriaceae, is not a permanent trait. It in due course of the time, bacteria may lose or gain the property to ferment lactose. Then Adansonian classification. To avoid the use of a weighted characteristic, Michael Adanson proposed another method 1774 that classifies organism based on equal weight to every character of the organism. This is also called phonetic classification. It has its greatest application in numeric taxonomy.
Numerical taxonomy. The concept was first developed by Robert R. Sokal and Peter H. A. Smith in 1963. With the advent of computer facilities, the principle of phonetic classification has been extended further so that very large number of characters of several organisms can be compared at the same time. They have created a taxonomic system by using numeric algorithm like cluster analysis rather than using subjective evaluation of their properties, which are arbitrarily given special weightage. Molecular classification. It is based on the degree of genetic relatedness of a different organism. Guanine plus cytosine content of a bacteria is estimated after extracting DNA from pure bacterial culture. The nucleotide base composition and the base ratio vary widely among different group of microorganisms, but for any one particular species it is constant. Nomenclature. Nomenclature is the branch of taxonomy that is concerned with designating scientific name to taxa based on a particular classification scheme and in accordance with agreed international rule and convention. Bacterial nomenclature also follows the same rule as proposed by Swedish botanist Carolus Linnaeus, who invented the modern system of binomial nomenclature. Scientific name for taxonomic level above genus are always capitalized but not italicized. For example, phylum Proteobacteria. In binomial nomenclature system, the scientific name of a bacteria comprises of a genus name, start with a capital letter, and a species name. Both genus and species would be written in italic or underlined. Example, Staphylococcus aureus or Staphylococcus aureus. The genus, plural form genera, is usually a Latin noun where the species refers to a defined taxon of organism within a particular genus. The genus and species are coined based on some property of the bacteria. Example, Staphylococcus aureus is the name after their arrangement in cluster. Staphyli means bunch of grapes and type of pigmentation they produce. Aureus meaning golden yellow. Neisseria meningitidis is the name after the discoverer U. Neisser, and the disease is it causes, that is meningitis. Brucella suis and Brucella melitensis named after the discoverer Brucella from David Bruce, and the animal host, that is Swiss meaning pig, and the place of discovery, that is Melitensis from Malta, Europe. The recent changes in the taxonomic range of a medically important microorganism have been depicted in table 3.1.2. Typing. The species can also be classified further by various typing methods as described in chapter number 3.3. Taxonomic name changes
of a medically important microorganism. Old name, new name. Bacteria, Clostridium difficile. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି Clostridioides difficile. Haemophilus aphrophilus ଏବେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି Aggregatibacter aphrophilus. Haemophilus paraphorophilus ଏବେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି Aggregatibacter paraphorophilus. Enterobacter aerogenes ଏବେ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି Klebsiella aerogenes. Now fungi. Absidia cormbifera ଏବେ ସେଟାକୁ କହୁଛି Listhimia crombifera. Penicillium marniefi ଏବେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି Talaromyces marniefi. Parasite Isospora belli. Now it is called as Cystoisospora belli. सिर्फ नाम चेंज हो गया, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है. Bacterial infection medically important to man. Based on gram stain, the bacterial infection can be grouped into infection caused by gram positive cocci, gram negative cocci, gram positive bacilli, gram negative bacilli, and miscellaneous bacteria that do not take up or poorly take up gram stain. Table 3.1.3. Okay. Medically important bacterial pathogens to man. Number 1, gram positive cocci. इसमें स्टाफाइलोकोकस स्पेसीज, जिसमें स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, कोआगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकी, कोआगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकी, that is CO कोआगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकी. स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस agalactiae, स्ट्रेप्टोकोकस viridans streptococci, स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae. Enterococcus species, that is Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium. Now gram negative cocci में नाइजीरिया meningitis, नाइजीरिया गोनेरिया. ग्राम पॉजिटिव बैसिल में कॉर्नीबैक्टीरियम स्पेसीज, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया. बैसिलस स्पेसीज में बैसिलस एंथ्रासिस. माइकोबैक्टीरियम स्पेसीज में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. नॉन ट्यूबरकुलोस माइकोबैक्टीरिया, that is NTM. माइकोबैक्टीरियम लेप्राe. अदर ग्राम पॉजिटिव बैसिली, लिस्टेरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, नोकार्डिया. ग्राम नेगेटिव बैसिल एंटेरोबैक्टीरियासी, एस्चेरिचिया कोलाई, क्लेब्जिएला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, सेराटिया, प्रोटियस, प्रोविडेंसिया, मोर्गानेला, सीजेला, साल्मोनेला, येर्सिनिया. नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैसिल स्यूडोमोनास, एसिनेटोबैक्टर, बुरखोल्डेरिया, स्टेनोट्रोफामोनास. उसके बाद वाइब्रियो एंड रिलेटेड जेनेरा, इसमें वाइब्रियो,
एरोमोनास, फास्टिडियस, ग्राम नेगेटिव बैसिली, इसमें हेमोफिलस, बॉर्डिटेला, ब्रुसेला। अदर ग्राम नेगेटिव बैसिल में कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, लेजियोनेला, क्लेब्जिएला, ग्रैन्युलोमैटिस एंड गार्डिनेला वाजिनालिस। एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्पोरिंग एनेरोब्स, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम स्पेसीज सच एज क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लोस्ट्रीडियोइडेस डिफिसिल। नॉन स्पोरिंग एनारोब्स में पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टेरोइडेस, प्रिवोटेला, परफीरोमोनास। देन मिसलानियस बैक्टीरिया में स्पिरोचेट्स, इसमें ट्रिपोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पाइरा, रिकेट्सिए एंड रिलेटेड जेनरा में रिकेट्सिया, ओरिएंसिया, बर्टोनिला, एरलिचिया। क्लामाइडिया में क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लामाइडिया पिसीटैक्सी, क्लामाइडिया निमोनिए। माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा निमोनिए। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि आज खत्म हो गया। जनरल बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी आज कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।